जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस डिफेंस पर। आमी और इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आपको थोड़ा मेरी आवाज़ के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा बिकॉज इस समय मुझे अच्छा खासा बुखार है और मतलब शरीर में काफ़ी फिजिकल पेन है। बट क्योंकि हम डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और मैं भी कभी डिफेंस में था, तो शरीर से तो नहीं हारेंगे, अपनी विल पावर के दम पर काफ़ी कुछ करेंगे। हेंस इट इज़ नॉट अ मिशन, आई हैव टू टीच एवरी डे, इसलिए मैं ताकत नहीं लगाऊंगा कोई बहुत ज़्यादा। आई विल बी सॉफ्ट टुडे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे। स्टार्ट करें आज के सेशन को। उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार ज़रा सेशन को शेयर कर दीजिए। मात्र 4-5 स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड इनफ टू स्टार्ट दिस सेशन। एक बार प्लीज़ वो कर लीजिए, रिफ्रेश, ये यूट्यूब वाले साइड को रिफ्रेश कर दीजिए एक बार, so that I can get to see how many students are there in the session. Because if there are only 3 or 4 students, then there is no use of such a session. Please go and get your friends, then only we'll start noun, or we'll just stop this here only. Rishi, Jai Hind. Rahul Yadav, Jai Hind. I was not commissioned officer, non-commissioned I was in Navy, so I got through AA, artificial apprentice. Rahul Yadav, Rishi and Alok Gupta. I hope I gave your answer, Alok. Umesh Pandey. See, there is a very simple scenario when you are in my session. I am not here just for 3 students. In this physical condition, I don't think that only 3 students is justified for my sake, for my hard work. I don't find it justified, as I know that you are there in these sessions. Multiple students are there, and you know the timing as well. The timing is 4 to 5 every TTS, Tuesday, Thursday and Saturday. So before we start, I want you guys to share this session, otherwise I'm just sitting here. Sir, class daily लीजिए? No, I'm not. I don't think. Actually, my schedule doesn't allow me to take classes on a daily basis. There are other batches as well, like UP Police, Bihar Police, Rajasthan, Madhya Pradesh Vyapam, MPSI, plus CUET, boards students. So there are multiple batches I am in. That's why I just can't, conduct classes on a daily basis. Everybody is asking, मैं कर सकता हूँ ये class? Anyone who is aspiring to be a cadet, anyone who is aspiring to be Agni Sainik, Agni Vayu Sainik, then yes, why not? If you are aspiring to become a cadet, yes, this class is for you. फिजिक्स की एक भी क्लास नहीं हुई है तो हो जाएगी चेतन भगत, अगर अभी तक नहीं हुई है तो होगी। मैंने आपको बोला हुआ है, और मैथ वाले प्रशांत सर ने भी आपको बोला होगा कि 3 क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी, 1 इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाँ, 2 दिन में 1 दिन चलेगा। इट इज़ अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव समझते हैं? एक दिन छोड़ एक दिन। TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरी क्लासेस हैं। बाकी प्रशांत सर की और रवि सर की क्लासेस का मुझे आइडिया नहीं है, बट इफ़ यू आस्क आई विल गेट दैट और आपको बता दूंगा आकर के। राधे राधे। वृंदा वन प्रेमी। आलोक, आई एम एन NDA एस्पिरेंट। वाई यू आर यूजिंग एन बिफोर NDA? NDA के पहले एन लगेगा? Tell me. I said share this session with your friends, otherwise I'll have to stop this session here only. That's the only thing I can do. I cannot continue with 7 or 10 students. Yesterday, a day before yesterday, it was even better that I could sustain the class. And in this physical condition, if you want me to continue the class with these 8-9 students, oh, I'm sorry.
Wait for a while. There are two classes going on right now. Huh? One is Mathematics Basic Maths plus Part 4 by Prashant sir, and one is Senapat series English Noun. Now they'll have the counter that these both are for different kind of students. No, I don't agree with that. Okay, what you sow, so shall you reap. Let's get started. Today we'll try to understand noun. What is a noun? From the very early childhood, we all heard the definition of noun. Noun is the name of any person, place, or thing. This is noun. But now we are grown-ups. So for us, noun is not just a name of any person, place, or thing, but it's even more simple. What it is, noun is a naming word. Anything which has a name is a noun. Like my cap has a name, it is a noun. My cheek, nose, nostrils, mustache, beard, my neck, jacket, t-shirt, hand, fingers, nails, stylus or pen, right? My watch, chain, eye, vision, intelligence, jealousy, honesty, intelligence, justice. These all things are noun. So anything which can be named is a noun, because noun word came from the Latin origin. Noun word came from Latin origin, because we know the definition, but if we talk about noun as a word, we do not know about noun in that way. Noun came from nomen. It is a Latin and French word, nomen, and meaning of nomen is name. So such words are known as loan words. Noun is a loan word which we have taken from other language and now we have adopted it as it is our own. सेम टाइम में दो क्लास चल रही हैं क्या सर? आपका पीडीएफ नहीं आया था टेलीग्राम पर? नो, आई कांट अग्री विद दैट. पीडीएफ जरूर गया होगा. ठीक है. नाउन केम फ्रॉम द वर्ड नोमेन, जिसको हम बोलते हैं नाम. ठीक है. अब नाउन के बारे में बहुत बेसिक बात तो ये है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट. इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नाउन बहुत सारे मायने में हमें एग्जाम में नंबर दिलाने की क्षमता रखता है. वो भी बताता हूँ कौन से वो मायने हैं जहां से नंबर दिलाता है हमें. प्लस जो हमारी बेसिक बचपन की रटंत विद्या थी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. So there are three things, right? If there is a thing and it has a name, it is a noun. If there is a place and it has a name, it is a noun. If there is a person and he has a name or she has a name, he is a noun, right? So this is a noun. In Hindi we say it sangya. What do we say it in Hindi? Sangya. Well, we do not need to know its Hindi counterpart, but even though, तो संज्ञा के बारे में थोड़ा और जानेंगे तो आपको ये कैसे मदद करता है. Because संज्ञा is closely related with subject of any sentence. And if you read about subject, you will read about subject verb agreement as well. Subject verb agreement. One of the most important topics in your textbooks. Another is pronoun. If you do not understand noun, there are less chances for you to understand pronoun. If you do not understand noun, how will you understand verb? So there are many topics which are interrelated with this noun thing. If we are reading active, passive or narration, you have to give a bit, focus on these noun pronoun thing. For now, noun is nothing but a naming word. और हर वो चीज जिसका एक नाम है, एक नाउन है. आप मेरे शरीर पर जो भी चीजें देख रहे हैं उसका एक नाम है तो नाउन है. आपके मन में मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है, दैट इज अ नाउन. मेरे मन में आपके लिए जो प्रेम है, लव, दैट इज अ नाउन. किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस एक नाउन है. किसी व्यक्ति के अंदर की जेलसी एक नाउन है. किसी व्यक्ति के अंदर का जुडिशियसनेस, न्याय संगतता, एक नाउन है. तो दीज ऑल काउंटर पार्ट, दीज ऑल वर्ड्स आर नाउन. ठीक है. ये सारे के सारे शब्द नाउन है, संज्ञाएं हैं. सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे.
ठीक है, एटलीस्ट जो है वो तो लाइक करें. We can't talk about rest, but we can talk about the people who are there in the class. Now, how do we differentiate noun? Well, it can be described in multiple ways. It can be, acknowledged in many ways. Like the first thing is we'll get to know kinds of noun. Kinds of noun. Yes. Second thing we'll get to know kinds of noun according to number. Based on number. Right? Again, kinds of noun based on gender. Last but not the least and very important, based on counting. Kinds of noun based on counting. See, so we can differentiate in 4 mini fractions. Now, if we talk about kinds of noun, so there is proper noun. One of the nouns, right? Proper noun. Other is common noun. Do we really need to understand them? Yes, we really need it. Common noun. Other one is collective noun. Next is material noun. In Hindi you say it padarthvachak sangya. Material noun. Last, abstract noun bhavvachak sangya. Abstract noun bhavvachak sangya. है ना? So these are 5. 1, 2, 3, 4 and 5. We'll talk about them later. How about number? So number 1, singular noun can be there, or plural noun, or plural noun can be there. Singular and plural. Next, gender. So there are mainly 3 genders. First is masculine gender. Masculine gender, masculine noun. Second one is feminine gender. Last one is neutral gender. Based on counting, very important. The one is not important, that is countable noun. Countable noun. Now, this is the fraction from where you get multiple questions in multiple, examinations, multiple competitive exams, and that is uncountable noun. Uncountable noun. Apart from them, you will get to know compound noun as well. After some time, we will get to know compound noun. So this is all we need to understand, and बीच बीच में रूल्स भी हमारे पास आते रहेंगे. ठीक है. So let us first understand kinds of noun: proper, common, collective, material, abstract. Right? If anyone has any idea, do let me know in the comment section that what is the proper noun. What is a proper noun? See, we need not to do PhD on common noun or proper noun, but we do need to understand them, right? Chaliye, we'll focus on understanding only. Something which is specific is common noun. It's proper noun, sorry. Common noun, by name it is very clear. जो सामान्य है, ordinary है, वो common noun है. For example, if I say player, कोई भी player हो सकता है, it is a common noun. मैंने बोला monument, कोई भी monument हो सकता है, कोई भी स्मारक हो सकता है, it is a common noun. मैंने बोला girl, कोई भी लड़की हो सकती है, it is common noun. Boy is a common noun. Doctor, any profession, is a common noun. Teacher is a common noun. Right? Etc. etc. But now, when we try to be specific,
Like in player, I say MS Dhoni. MS Dhoni. So now it is name of a person. Now it becomes what? Now it becomes proper noun. Again, monument. We say it's Lal Killa. Now we just witnessed a blast around, Lal Killa campus. So I will not write it down. I will prefer jotting down the name of Unity of the Statue of Unity. Girl, any girl you can name. If there is any girl, Rahul, Chetan, Abhijit, no girl. Yeah, there is Sangeeta, right? Sangeeta is girl now. Any boy, Rahul is a boy, right? Any doctor, Bajwa, Doctor Bajwa. So he is now a known person, a proper noun. Any teacher, you can say Aditya Bhaiya. This is your proper noun and common noun. Easy to understand. Again, moving forward, we get to know collective noun. Samuhawachak Sangya. Where you see some sorts of collection, some sorts of, mass, जहाँ पर चीजों को गांठ बांध करके रखा जा रहा है. Like class is what is a class? Class is a collective noun because students कई सारे होते हैं तब जाके क्लास बनती है. Lions के समूह क्या बोलते हैं? Pride, group of lion. Crowd, group of people. Mob, group of agitated people. Agitated बोले तो those who are ready to, show their wrath on public property, and those who are out of their mind are part of mob. You must have heard a word mob lynching. What is the meaning of mob lynching? If a person is beaten brutally by some people, that is mob lynching, right? Many instances are there. Once it happened that in Maharashtra, somewhere in, I don't remember the name right now, in Maharashtra there was a place, and that place was actually a Muslim community, and two sadhus were going from there, and they were brutally beaten and then killed, right? So that is mob lynching. Because of their identity, because of their creed, they were killed, and there was no other reason to kill them. There was no other reason to beat them. So this is mob lynching, because mob is out of their mind. Mob is not thinking. Mob is only doing what they want to do, because mob is crowd. A crowd that cannot be handled without using some kind of oppressive measures. So you have to use some oppressive measures to stop that mob. I hope you are getting it. Moving forward, school. Now you must be thinking that school is group of students. No, it is not. School is group of owls. What did I say? School is group of owls? No, that is parliament. Parliament is group of owls. Parliament. School is the group of fish जिनको कुछ खाने को चाहिए. That is the school. Parliament group of owls को बोलते हैं. There are many more. Okay. Moving forward, there is material noun. Now, what is material noun? कोई भी पदार्थ का नाम ले लीजिए. Iron is a material. Plastic is a material. Gold is a material. Platinum is a material. Thorium is a material. Vibranium is a material. Chromium is a material. Many more, right? Last is abstract noun. Abstract noun. Love is abstract. Justice is a noun and abstract. Intelligence, jealousy, respect, and all sorts of emotions. All emotions are considered
with a part of abstract noun, right? So now you understand what is proper common collective material abstract noun. At least you know the examples. And now hate is a verb, hatred is the noun. So you can say love and hatred. Love is a verb and noun both, but hate is only verb. Hatred is the noun. Okay. Moving forward. So now you know this segment. Singular, plural, we all know that any noun, a noun is always singular. When it originates in its true form, in its Pates form, it is singular. If you say boy, it is singular. If you say girl, it is singular. If you say car, it is singular. Right. Now you make it plural by using s or es, by adding s or es. Just add that s or es and that will become plural. So this is boys and this is girls and this is cars. Very basic, not particularly of your use. Again, gender, masculine gender, feminine gender, neutral gender. Very few times they ask questions from the gender, and I didn't see questions in recent years. Yeah, when I was an aspirant, that time they used to ask such questions, such silly questions, I would say. Now, important one is uncountable. What is countable and uncountable now? Let's discuss that. From its very name, countable, noun. Something that can be counted is countable noun, right? See, something जिसका आप प्लूरल बना सकें, जिसका आप प्लूरल बनाया जा सके, प्लूरल बनाया जा सके, साथ के साथ जिसको गिना जा सके, दैट इज काउंटेबल नाउन. एंड एट ऑल ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नॉट एट ऑल. आगे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन इज नाउन जिसका प्लूरल आप नहीं बना सकते, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. जाहिर सी बात है, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, तो प्लूरल कहां से बनेगा. इसके साथ कुछ खास बातें हैं. ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा. तो जाहिर सी बात है, इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, इसके साथ मैनी का यूज नहीं करेंगे. इसके साथ अगर करना ही है, बहुत मन है आपका, तो आप मच का यूज कर सकते हैं. मेक सेंस, राइट. नेक्स्ट, जनरली, सामान्यतया, सामान्यतया वी डू नॉट यूज आर्टिकल विद देम. आर्टिकल नहीं यूज करते. ए एन को तो बिल्कुल ही यूज नहीं करते. का भी यूज कभी कदार करते हैं, ठीक है ना. दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. देयर आर मेनी अनकाउंटेबल नाउन्स. अगर हम गिनने पर जाएंगे, लिखने पर जाएंगे, तो देयर आर मेनी. फॉर एग्जाम्पल, एंड फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल्स, आई वुड से पोएट्री इज अनकाउंटेबल. मिसचीफ, ये वर्ड्स पेपर में देखे गए कईयों बार. इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एविडेंस, एडवाइस, सीनरी, etc., machinery and all. Please look at this because I need a break, at least 2 minutes. I need to sit only.
Okay, moving forward, we'll get to see rules, many rules, and they help us. Articles are not used before material nouns. तो जब भी material nouns आपके सामने आएंगे तो आप उसके पहले article नहीं लगाएंगे. The leather is used in making shoes. See, leather is an article. Sorry, leather is a material. तो material से पहले आप article नहीं लगाएंगे तो दा हट जाएगा. Leather is used in making shoes. अब ये एकदम सही है भैया, leather is used in making shoes. तो आप material noun से पहले article नहीं लगाएंगे. Right? आगे आते हैं. Material nouns and abstract nouns are not material nouns and abstract nouns are not used in plural. क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें अक्सर दो ही होते हैं, या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, या तो मटेरियल नाउन होते हैं, है ना. तो यही दोनों यार काम कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल का. गोल्ड, कॉपर, वुड, स्ट्रीट, ये सब के सब क्या है भाई, कि गोल्ड, कॉपर, वुड, स्ट्रीट ये सब मटेरियल नाउन है. तो केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी. नो, केयर ऑफ ओल्ड इज नेसेसरी, नॉट केयर्स. तो दिस केयर इज ओके, केयर्स इज रॉन्ग. प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन्स को कभी कभी हम कॉमन नाउन की तरीके भी यूज करते हैं. समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. समुद्रगुप्त क्या था भैया, नेपोलियन ऑफ इंडिया थे. तो समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर देखिए, नेपोलियन अपने आप में इंसान का नाम है, फिर भी आपने उसके पहले दा लगा दिया. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ नेपोलियन हियर. कि समुद्रगुप्त हमारे यहाँ जो शासक हुए वो नेपोलियन की सभी क्वालिटीज को अपने अंदर समावेशित किए हुए थे. वो भी जीतने के उससे आगे रहते थे, काफी एक्टिव थे, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है ना. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो ही इज द शेक्सपियर. कालिदास के पीछे आर्टिकल नहीं लगा बिकॉज ही इज प्रॉपर नाउन हियर ओनली. लेकिन शेक्सपियर को क्या बना दिया भैया, कॉमन नाउन. शेक्सपियर की जैसी क्वालिटीज की, जैसे शेक्सपियर का लिटरेरी लिटरेचर बहुत अच्छा था, उसी तरीके से कालिदास का भी लिटरेचर बहुत अच्छा था एंड एवरीथिंग. दोस्तों आई वुड से कि लेट्स कंटिन्यू ऑन सैटरडे, है ना. क्योंकि जिस स्थिति में हूँ मैं, ऐसी स्थिति में कंटिन्यू कर पा नहीं रहा हूँ यार, है ना. इट्स रियली गेटिंग हार्ड फॉर मी. मैंने सोचा था जैसे तैसे क्लास ले लूंगा, पर जैसे तैसे वाली तुम लोग बच्चे हो नहीं, है ना. वैसे भी तुम्हारा सपोर्ट इज नील, और ऐसे में मैं अपने शरीर को और तपाऊं, आई डोंट थिंक इट हैज एनी लॉजिक. तो आज के लिए तो मुझे माफ करिए दोस्तों, आज मेरे से हो नहीं पा रहा. मतलब आई एम इन इमेंस पेन, और वो पेन अब अपने से झेला जा नहीं रहा. आई वुड से कि इसके आगे का जो नाउन है वील कंटिन्यू ऑन सैटरडे. ठीक है. थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड आई रियली विश कि आप अगले सेशन में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे और पहले से उन्हें लेकर के आ जाएंगे. तो अगला सेशन होगा सैटरडे को, नाउन पार्ट 2 करके लिख करके आएगा. ठीक है. ध्यान रखिए. टेक केयर. जय हिंद एंड प्लीज प्रे फॉर मी.